हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और अगर इस प्लेटफॉर्म पे होने वाले डिस्कशन से आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड होता है तो कंसीडर करो सब्सक्राइब करना, लाइक करो और कमेंट में कोई फीडबैक हो तो दे सकते हो। अगर आप पंजाबी म्यूज़िक सुनते हो या कोई भी ज़िंदगी में पंजाबी गाना सुना हुआ है या छोटे लेवल के भी पंजाबी गानों के फ़ैन हो तो आपने एक वर्ड सुना होगा, जट। जट वो इंसान है जो सुपर हीरो है, सुपरमैन है, वो सबकी फाड़ के रख देगा, सबकी बजा के रख देगा और एंड में लड़की को ले जाएगा और ये और वो। और मेरे बहुत सारे जट दोस्त हैं और आई होप वो माइंड नहीं करेंगे मेरा जोक करना इस बारे में। एनीवे, बेसिकली वो लोग जो कम्युनिटी है उनका ओरिजिन होता है खेती वगैरह से और पंजाब में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है। इसी के ही लाइक ब्रदर या कज़न ग्रुप्स कह सकते हो आप, अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान में भी होते हैं, बट जस्ट रिलीजन डिफरेंट है। बट जिस कम्युनिटी है जट्स की वो सेम है। हरियाणा में जो जाट है या वेस्टर्न यूपी में जो जाट है वो भी अगेन सेम पीपल ग्रुप है, बट अगेन रिलीजन डिफरेंट हो जाता है। हिंदुज़म जो जट कम्युनिटी है बेसिकली वो मोस्टली पंजाब में और मोस्टली सिख हैं और पंजाब या पंजाब के बाहर जहाँ भी हो, कनाडा फॉर एग्जांपल। तो एनीवेज, आज अभिजीत चावड़ा जी की वीडियो देखते हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि हु आर द जट्स। लेट्स गो। While rereading the history of the Jatts, I come across statements like the Jatt people आकाश भुल्लर, ये भी जट होगा भाई लौंडा। are considered as the merged भुल्लर वो descendants भुल्लर of Indo-Aryans, Indo-Scythian tribes of the region, merging to form the Jatt people. They are known as Goths in Germany, which was a tribe that defeated the Romans. This is basically stating that Jatts are Aryans, and it's false, and the Aryan migration theory is a sham. So basically what you're asking is, what is the origin of the Jatts and were they always in India? Excellent question. So let's start at the very beginning. At the very beginning, all the Rigvedic clans were in India. Then you had the Battle of the Ten Kings, in which the losing coalition, all of the clans were expelled out of India. They had to run for their lives. So they went westwards, they went northwards, and then the regions of Uttara Kuru and Uttara Madra were formed, which were named after Kuru and Madra regions of India, which is the Ganga Yamuna region, which is Kuru, and the Madra, which is west of that. So Uttara Kuru and Uttara Madra were named after these ancestral regions of these exiled Rigvedic clans. And later on, these people, these exiled clans, they established great kingdoms in Central Asia. The whole of Central Asia was Indian. It was Indianized. They spoke Indian, Sanskrit-derived languages. And most likely these are the ancestors of today's Europeans, the ones who spread westwards in great invasions. And these are also the ancestors of the Scythians and the Kushans, who were also basically... See, the Scythians are represented in artwork, modern artwork, as being fair-skinned, European-looking skin, blonde-haired or red-haired, right? That's how they're presented in नहीं, sometimes they are also represented as a little bit Mongolian looking. Basically अगर आपने किसी सेंट्रल एशियन को, कज़ाक इंसान को देखा होगा तो वो एक मिक्सचर लगता है एक चाइनीज़ और एक रशियन के बीच में, कहीं ना कहीं उज़्बेक भी ऐसे ही लगते हैं। टर्किक लोग होते हैं बेसिकली वो ओरिजिन में, और स्किथियंस को कई बार एज टर्किक लुकिंग, जो मॉडर्न डे टर्किक लोग हैं उनके सिमिलर लुकिंग भी रिप्रेजेंट किया जाता है। popular artwork. But when you find Scythian burials, you analyze the DNA, you can tell their skin tone, their hair color, etc. We know that they had light skin but not white skin. So their skin tone would have been similar to mine, okay? And they had like dark Uzbek hair people. and brown eyes. So they would look like me, I guess. See, so that's what a typical Scythian looked like. They were of Indian origin. Today they are called Iranian peoples, but the Iranians themselves are of Indian origin, FYI. Yeah. So these Scythians, they roamed the whole of Central Asia, the great steppes of Central Asia. और बाय द वे इरानियंस क्लेम करते हैं बहुत सारे कि जो होल पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा, पूरा नॉर्थ इंडिया बेसिकली वो लोग क्लेम करते हैं कि ओरिजिनली इरानियन ही है। ये ऐसा उनका क्लेम है। All the way from Eastern Europe, all the way into present-day Xinjiang, so-called Xinjiang of China, where the Kushans or the Tokharians lived. So there was a great expanse across Eurasia. So these are Indian origin peoples. The Scythians were not one
homogeneous Mm. people. They had their own Yeah. clans and subdivisions. They may even have had a number of languages. And one of these Scythian clans was called the Massagetae. The Greek historian Herodotus from the 5th century or 6th century BCE, he wrote about this clan called the Massagetae. They are the Mahajats. Okay, so these are people who had gone out of India, and their homeland was east of the Caspian Sea. So it was the region of Kazakhstan, Uzbekistan, north of Turkmenistan. Iran and parts of present-day Afghanistan, and हाँ they तो वही हो गया entered ना, into नॉर्थ ऑफ ईरान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान. conflict with the Achaemenid dynasty, the Hakshamanish dynasty of Iran, and they had a great queen called Tamri. In Greek, they call her Tomyris, and she fought a great battle with the Persian king Kurush, Cyrus the Great. It was a terrible. ओके, ये बात आप ध्यान देना स्किथियंस के बारे में कि उनकी जो सोसाइटी थी वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज थी कि उसमें वुमेन वॉरियर भी होते थे. Battle, the most terrible battle the Greeks had ever seen, and she killed Cyrus the Great and took his head with her in retaliation for his killing her son. So these are the Massagetae or the Mahajats, and they went westwards, and they in Europe they were called the Goths, and the यार विजिगॉथ्स तो नहीं कह रहे. विजिगॉथ्स एक ग्रुप था, आई थिंक जर्मैनिक ट्राइब्स के अंदर आता था. Visigoths, One of the Germanic. Ostrogoths. Yeah. So Yeah, these are the Visigoths, people yes. who actually sacked Rome at one time. Yeah. So there is this ethnic and cultural continuum that connects Europe and parts of Asia all the way up to India. And so these Massagetae or Mahajats are connected to the Jatt people of India. The Jatt people in India are spread across many states, mostly to a significant extent in Punjab, Haryana, but also in western UP, parts of Rajasthan, etc. It's a very Rajasthan में large भी जाट है. geographical extent. So the Massagetae or the Mahajats, this Scythian clan or tribe, were an extension of the Indian Jatt people. It is not known whether they came into India and reunited with the Indian Jatts or not, but it is the same people. And the same people, their descendants are still found in Europe. And there is a great similarity in names also of the Jatt people and people in certain parts of Europe, especially Germany. Right? So I will refer you to a very good article about this topic. Let me share that on the screen. ये अच्छा कर. So here it is. The article is called Uttarakuru and the Jatts. It's by Dr. Subhash Kak. I highly recommend you read this article. It gives a great deal of information about this very specific question. Very interesting article, and you should read more about articles by Dr. Kak, who is a wonderful scholar. So that is the answer in brief to this question. It's a very long roundabout story, but the Jatts are basically Indians, and they are closely connected to the Mahajats or the Massagetae clan of the Scythian people, who were also an Indian people, Indian origin, and they are connected to the Ostrogoths and the Visigoths and various Germanic people as well. So it's the same ethnicity and ancestry overall. Very interesting story. While ओके, खत्म हो गई वीडियो. ओके, अच्छा, जैसे आप किसी स्कॉलर को कंटिन्यू फॉलो करते हो तो आपको ये भी धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाता है कि उनकी जो एक ओवरऑल लाइन ऑफ थॉट है वो किस एग्जैक्टली लाइक किस स्टोरी में, लेट्स पुट फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड मैं यूज़ स्टोरी टर्म यूज़ करूँगा, किसकी स्टोरी में या किसके वर्जन ऑफ हिस्ट्री में के साथ अलाइन करती है. तो जितना मैं अभिजीत जी को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, ये इनका जो वर्जन है हिस्ट्री का, वो जो हमें बुक्स में पढ़ने को मिलता है उससे, या फिर अभी तक जो जनरल नोन नॉलेज है उससे काफ़ी एक डिफरेंट ट्रैक पे, लाइक ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी या फिर लाइक सुनने को मिलती है. अब ऐसी चीज़ में एक चीज़ ध्यान रखने वाली है ऐसी सिचुएशन में कि राइट अवे ऐसी चीज़ को आप डिस्कार्ड भी मत कर दो, लेकिन फुली बिलीव भी मत करो. अपनी खोज और अपनी पढ़ाई जारी रखो.
ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज को फॉलो करने की कोशिश करो, और जो आपको ओवरऑल हर चीज़ में जिसमें लॉजिक की कंटिन्यूटी मिलती है, जिसमें आपको प्रूफ्स की कंटिन्यूटी मिलती है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको प्रोबेबल लगती है आपके खुद के माइंड के हिसाब से, उस पे आप अपना बिलीव रखो, या और बिलीव भी ऐसा वाला नहीं कि आप उसको अनजान जान, आई मीन अनशेकेबल वाला। आप ओपन रहो, और अच्छा इस वक्त मेरी ये पोजीशन है, उस पर आप अपनी पोजीशन रखो, और विच शुड बी ओपन फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन। हिस्ट्री के बारे में और एंथ्रोपोलॉजी के बारे में मैं, यही मेरा आइडिया है। बहुत इंटरेस्टिंग थी ये इन्फॉर्मेशन जो इन्होंने यहाँ पे दी। मैं अपने एंड से भी थोड़ा सर्च करूँगा इस पर कि अगर मुझे कुछ, ऑफ कोर्स जो है इन्होंने आर्टिकल दिया है, जो मिस्टर काक है, मैंने उनका एक टॉक सुना था, सृजन टॉक्स नाम से एक चैनल है यूट्यूब पे, उस पर अभिजीत जे के भी लेक्चर्स हैं, और उनका भी एक लेक्चर था वो मैंने सुना था। उसमें उन्होंने आई थिंक ब्रिटिशर्स की इंडिया की जो सिचुएशन है उसके बारे में कुछ बताया था। थोड़ा टाइम हो गया अब, बट अगेन आर्टिकल पढ़ूंगा, और कुछ और सोर्सेज से भी, क्योंकि हमेशा रिसर्च एक चीज़ मांगती है या डिज़र्व करती है कि आप डिफरेंट मल्टीपल सोर्सेज से किसी भी चीज़ का पता करो, और उसमें जिस चीज़ को कोरैबोरेट कर रहे हो सारे, उसको ही ट्रूथफुल मानो, और इंडिपेंडेंट सोर्सेज से लो। एनीवे, आज के लिए इतना ही, मेरा यही सजेशन होगा। देखने के लिए थैंक यू।